what is critical temperature? The temperature above which the gas can be liquefied. The cannot be liquefied. Above which? सर आपने लास्ट क्लास में क्या above which? अच्छा Above which a gas cannot be liquefied. Is called TC, critical temperature. Now critical temperature is 8A upon 27 RB, where A and B are Vander Waals constants. Now, for an ideal gas, A is equal to 0. B is also equal to 0. So what is TC? TC is 0. For an ideal gas, critical temperature is 0. That is, an ideal gas cannot be liquefied. Cannot be liquefied. Write it down. Your health fine? Is your health fine now? Chalo. Shall we? What is A? A is a measure of intermolecular forces of attractions. Now, देखो, if A is more, it means more of intermolecular forces of attractions among the molecules, and I am saying if A is more, then I can say a gas is more easily एक ही बात है more easily liquefied. So a gas is more easily liquefied. Now what is B? B is the measure of the size of the, it talks about the size of the particle or molecule. Size of the molecule. उससे related जब question करेंगे तो I let you. Yes, now critical pressure. The pressure of a gas at critical temperature TC, the derivation is not required, is called TC, and TC is A upon 27 B square. What is critical volume? Yes, volume of one mole of a gas at critical temperature. We see volume of one mole of a gas at TC is called VC. What is VC? VC is VC. critical temperature में R क्या था? R gas constant. अच्छा. Gas constant. VC. R is gas constant. R is gas constant. Done? Now, if I want to write the compressibility factor in terms of PC, TC and VC, देखो Z की वैल्यू आपको पता है Z is equal to EP upon nRT? Yes or no? Yes. Okay. अब मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिखता हूँ. इसको ऐसे
से लिखो डायरेक्टली कि अगर हाँ तो वैसे लिखो if z is equal to pv upon nRT, ठीक है, और मैं z की वैल्यू को ले रहा हूँ 1, I'm taking z की वैल्यू 1. Now p changes to pc, v changes to vc, and t changes to vc. And tell me the relation. Tell me the relation among PC, VC, TC. Wireless. Put the values there. PC की value A upon 27B square. TC is 80 upon 27 RB. Now, लिखो पहले. TC is 8 upon 27 RB. 3 by 8. 3 by 8. Okay. Okay, wait. So it is 80 upon 27 RB. And PC is A upon 27B square. And VC is 3B. Just put these values over there. Z को वैल्यू मत दो, you don't have to take Z is equal to 1. आप मुझे ऐसे बता दो कि Z को बता दो in terms of VC, PC, TC. You don't have to take it on. Tell me. मतलब I want to say कि you just replace PC, VC upon N भी छोड़ दो for one mole कर दो R PC. N is 0. 3 by 8. 3 by 8? Is it 3 by 8? मतलब PC, VC upon TC आ रहा है ना? Yes, sir. PC, VC upon TC? Yes. Okay. Okay. So this implies that PC, VC upon TC, right? Yes, sir. Is 3 by 8? Eight. Please remember this relation. I hope everyone is getting the same relation. 3 Yes, by sir. 8? Yes, sir. Yes, tell me. Is it clear? Gayatri, Anjana, Bhavika, Pujita, Shanmukha, tell me. Yes, sir. Sheetal? Alright. Chal. Alright then. Sir, here R has to be written. R has to be written? R has to be written? 3 by, you were saying 3 by 8 R? R कट गया है. हाँ हाँ. वो TC की वैल्यू से कट गया. 27 R भी. Ankit? Yes, sir. So PC is equal to 3 by 8 becomes 3R by 8. 3R by 8. 3R by 8? No, sir. Are you sure? Yes, sir. And what about this R? एक R यहाँ पर भी तो है 8A upon 27 RB. चलो So how are you? I'm good. How are you? All good. You must be happy since this is your extra week. नहीं? Yes, sir. Yes. So how are you, Professor? Consider the Vander Waals constant. Consider the Vander Waals constants. Consider the Vander Waals constants A and B for the following gases. For the following gases, A in atm decimeter versus 2 and B is given there. 10 to the power minus decimeter cube per volt. The gases are, okay, let me write the values first. 1.3, 3.2, 0.2, 1.7, 5.1, 1.0, 4.1 and 5.0, and this is for argon, krypton, no, this is for neon, this is for krypton and this is for xenon. Which gas is expected
which gas is expected to have the highest critical temperature? Highest TC. Tell me. Xenon? हाँ Okay. What about others? नहीं sorry Krypton. Krypton? हाँ Sir, Krypton Kr. Kr krypton? What about others? Varanshi? Think about it. I just showed the expression for TC. If you look at it carefully, can I say that TC is सर ये वर्क नहीं होगा हाँ कैसे होगा? सर इसमें 8.27 आरबी उसका वो था ना तो उसमें हम फिर बी की जो अपने वैल्यू दे रखी है वो पुट करके देखेंगे तो इसमें जो क्रिटिकल होगा काफी ज्यादा है देखो, can I say that TC is directly proportional to A upon B? यस सर Yes, तो A upon B जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा होगा उसकी सबसे ज्यादा. So is it krypton? यस सर Yes. So krypton is the right answer. Krypton. Any problem? Krypton is absolutely fine. Krypton is absolutely fine. Now, please do this question carefully. For 1 mole of a Vander Waals gas, Vander Waals is a real gas, by the way, Vander Waals gas. When B is equal to 0, and temperature is equal to 300 Kelvin, the PV versus 1 upon P curve, the PV versus 1 upon P plot is given. The value of A in atm liter per mole square is A1, B 4.5, C 1.5, D 0.0, and let me tell you the plot. Using this information, the plot, liter atm per mole, this is fresh 1 by volume in mole per liter, and this is 20.1, this is 21.6, 23.1, 24.6, this is 2, this is 3, and this is my information here. This is 20.1. Sir, it is 1.5. 1.5. All right. What about others? Sheetal, you have done everything? Yes, sir. Okay. Sorry. But this is simple if you remember the last class. See? अच्छा उससे सबसे पहले करने से पहले तो ये वाली चीजें बनाओगे, क्योंकि ये वैल्यूज दे रखी है तो समथिंग रिलेटेड टू स्लोप यू हैव टू डू ना, फिर स्लोप फाइंड आउट करोगे, बट कौन सी इक्वेशन का स्लोप फाइंड करोगे? वॉन डर वाल गैस है तो वॉन डर वाल इक्वेशन तो लिखोगे, उसमें b की वैल्यू 0 है, बस फिर इक्वेशन बना दो, b की वैल्यू 0 है तो सेकंड टर्म में से b बचा, b माइनस b की जगह b, और बस ओपन द ब्रैकेट्स,
ये किया था ना हमने P plus A upon B square, क्योंकि 1 बोल है तो n की वैल्यू मैंने वन a n स्क्वायर होता है और into पे v हो जाएगा क्योंकि v minus v तो 0 है तो v है is equal to RT is equal to RT। बस अब क्या सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा PV plus A upon V हो जाएगा is equal to RT। So PV is equal to RT minus A by V। तो देखो PV और 1 by V के बीच में आपको ग्राफ बनाना था, स्लोप क्या है? A। बस स्लोप निकालना। Find the slope। Y is equal to C plus minus MX। Obviously स्लोप माइनस नेगेटिव है ना, देखो नेगेटिव स्लोप है और x ये 1 by V है 1 by V और PV y एक्सिस पे है ऑर्डिनेट एब्सिस सा ऑर्डिनेट तो स्लोप इज माइनस है, मतलब आपकी जो ये वैल्यू निकल के आएगी माइनस है एक है तो माइनस एक स्लोप निकालो तो इसका मतलब स्लोप व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1। चलो करो y2 क्या है सो 1 आ रही है 1 20.1 तो देखते हैं, चलो y2 क्या है सर में 20.1 तो इसके corresponding y2 ये ना 20.1 और y1 21.6 divided by 3 minus 2 so minus a is equal to इसको सॉल्व करो कितना है चलिए नीचे तो पानी है 0.9 so go 0.20 yes sir 20.1 है this is 20.1 तो minus 1.5 है ना ये 1 है this is 20.1 ना this is 20.1 तो minus 1.5 तो ये तो एक वैल्यू क्या है 1 point is 1.5 सी है क्या सर वहां पर हमने a को नेगेटिव के लिए सामने देखो नेगेटिव स्लोप है ना, यहाँ से पता चल रहा है ना नेगेटिव स्लोप है ये तो तभी तो मैंने लिखा प्लस ऑफ माइनस n तो नेगेटिव क्लियर गुड सर मुझे पता है टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे उनमें डाउट्स हो वो तो अभी स्कोर मिलेगा आपको टेस्ट का सर मिलेंगे अच्छा वो साथ ही साथ मिल जाता है ना ठीक है आई डिस्कस इट वन ऑफ द क्लासेस में the compressibility factor for ideal gases z की वैल्यू फॉर एन आइडियल गैस 1.5 1 to infinity 1 ठीक है चलो सो क्वेश्चन था z for an ideal gases next question a mixture of nitrogen and argon gases in a cylinder contains 7 grams of nitrogen and 8 grams of argon. 8 grams of argon. If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is 9 in bars, 9, 12, 15, 18. सब आर्गन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कितना होगा आर्गन
तभी तो आइसोबार्स है। अब तो आइसोबार्स भी तो है आर्गन और कैल्शियम। वैसे वो क्वेश्चन में दिया होगा, मैंने नहीं दिया। Sir, what is the atomic mass of argon? 40. Argon and calcium are isobars also, if you remember. 15. Is it 15? Tell me. Sir, 15 C. 15. So, just 30 seconds more. Sir, argon very low, sir. How is it different? What you are getting, Manal? Tell me. Yes, Manal. Partial pressure of nitrogen is what? 60 seconds, sir. Mole fraction of nitrogen into the total pressure? Yes or no? And what is the mole fraction? Yes, sir. 5/9. Mole fraction is 5/9. So 5/9 into 27. It is 15 bar. 15. And how I how I got this mole fraction? That is number of moles of nitrogen, which is 7 upon 28 upon total moles, which is 7 upon 28 plus 8 by 40. When you solve it, you are getting 5/9. 5/9? Yes, sir. Okay, chalo. Yes, sir. All right. Equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole through which both can escape. What fraction of the oxygen escapes in the time required for one half of the hydrogen to escape? Three by 8, 1 by 2, 1 by 8, 1 by 4. So 1 by 8. Okay, Manal, 1 by 8. Shanuka, C. Okay. What about others?
tell me. Look. Number of moles effused. क्योंकि effusion है through a pinhole, तो कितना होगा? Sorry, number लिखना होगा. Moles effused is equal to rate of moles effused is equal to moles upon time. Moles effused upon in the given amount of time. Yes or no? So can I write it as moles of oxygen divided by moles of nitrogen into T of hydrogen divided by T of oxygen is equal to under root of M of hydrogen upon M of oxygen. क्योंकि रेट को मैं ऐसे रेट का फॉर्मूला है रेट diffused rate of oxygen effused upon rate of hydrogen effused is inversely proportional to the square root of their molecular masses. So इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n of O2 divided by n of H2 into because this is inversely proportional to the rate. So T of H2 upon T of O2 and this is m of H2 upon m of O2. Can you please find out now? You need to find out n of O2. What fraction of the oxygen escapes in that time required for 1/2 of this? So basically this value is 1/2. Yes or no? So I can write that half. Okay. Or equal time I guess. Yes, sir. With the pinhole through which what escapes the time required for 1/2. So this is equal to under root of what is the molecular mass of hydrogen? 2 and for oxygen 32. 16 अब आएगा सॉल्व करके root 1/16 तो ये हो गया आपका 2 into O2 is equal to root 1/16 which is 1/4. Yes or no? 1/8. So n of O2 is 1/8. So 1/8 is the answer. Who said 1/8? Reshma, Sharmukha, yes, and Nikita, yes, 1/8. You said 1/8. आ गया ना लेकिन. So 1/8. Is it clear? Yes, sir. Next. What is the density? What is the density? What is the density of nitrogen gas? What is the density of nitrogen gas at 22 to 7 degree Celsius and 5 atm pressure? देगा था A 1.4 gram per ml, B 2.81 gram per ml, C 3.141 gram per ml, and D 0.29 gram per ml. Sir, it is 3.41. 3.41 आ गया सबका? Yes, tell me. Yes, sir. So formula Pf is equal to dRT. Yes or no? dRT plus d निकालना है. T की वैल्यू कितनी है? 5. M is 28. D is down. R is 0.0821 into temperature is 500. 500. मतलब क्या बोल सकते 500. 500 gallons. 500 So बस solve करो ठीक. कितना है? 3.14. 3.41. 4. Okay, 3.41 gram per ml. Simple.
Next, a certain gas takes 3 times as long to diffuse as long to effuse as out as helium, effuse out as helium. Its molecular mass will be A 27, 36, 27U, 36U, 64U. Nine. 7. $96U. 96U. Tell me. देखो इसको मैं लिख सकता हूँ rate of volume effused out is equal to volume effused out with respect to time. So I can write V1 upon V2 into T2 upon T1 is equal to under root of N2 upon N1. Yes or no? Yes sir. Yes, बस अब क्या है? तो ये तो सेम ही है, a certain amount of take as long as to diffuse out. तो T2, but time का हमें concept निकालना है. A certain gas takes 3 times as long as to effuse out. तो ये मैं लिखता हूँ 1/3, and this would be what is the molar mass of helium? 4, and M1 is what you are supposed to find out. So squaring on both the sides, this is 1/9 is equal to 4 upon M1. So M1 comes out to be 36. 36 units is fine. Yes. 36 units is fine. मैं इसको भी करने के लिए तो रेट से भी कर सकते थे ऐसे वाला पॉइंट ठीक है. Next, 2 gases A and B. तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आता है. आएगा वो कराएंगे अभी आएगा. पहले इसका कराया उसके क्वेश्चन. हाँ. Okay. Next, maximum deviation from ideal gas is expected from ideal gas is expected from CH4 NH3 N2H2. CH4 NH3 H2 N2. Sorry. Maximum deviation from ideal gas is expected to be CH4. CH4. Okay. What about others? Sir, NH3 due to dipole-dipole attraction. Dipole-dipole. Hydrogen bonding. देखो पहले ही देखो
मैक्सिमम डेविएशन कौन दिखाएगा बताओ, जो गैस इजीली सबसे इजीली लिक्विफाई हो सकती है और सबसे इजीली लिक्विफाई होने के लिए ए की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और ए क्या मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, तो इनमें से किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग है? And it's because of hydrogen bond. B is going to be the right answer. Even if the A values are not given to you in the question, you can easily figure out. ठीक है? और एक है जिसमें A values given है, वो वाला निकाल लेते हैं. Given Vander Waals constants, E की वैल्यू given है आपको 4 gases के लिए. NH3 H2O2 CO2 NH3 पे 4.17 0.244 1.36 3.59 आपसे पूछा है which one of the following is most easily liquefied? Tell me. Which one? NH3. Ammonia. Ammonia because the A value is maximum. Yeah, ammonia. Ammonia is most easily liquefied. A gas at 350 Kelvin, and 15 bar has molar volume. 20% smaller than that for an ideal gas. Under the same conditions, the correct option about the gas and Z is less than 1 and repulsive forces are dominant. B Z greater than 1 and attractive forces are dominant. Z greater than 1 and repulsive forces are dominant. B Z less than 1 and attractive forces are dominant. Right, fourth option. More less than 1 attractive. Fourth option. Tell me. The B option. Fourth option. Just a second. Fourth option. देखो. What is Z? Z is VDL upon V ideal. Yes, sir. And V ideal is greater than V real. So Z is less than 1. And less than 1 होती है negative deviation और negative deviation मतलब attractions are stronger than the repulsions. Gas is easy to liquefy, easy to compress. Z less than 1, negative deviation, easy to liquefy, easy to compress. If a gas expands at constant temperature, it indicates that a kinetic energy of molecules remains the same number of molecules
decreases, pressure of a gas increases. चल A. The A option. Kinetic energy of molecules kinetic remains the energy same. remains the same. Why? Because kinetic energy is a function of temperature. Yes. Tell me. Yes. Yes, Manal. Is it A? Is it This is option A. option A? Okay. See, kinetic energy remains the same. Why? Because it's a function of temperature. And if it is expanding at constant temperature, then kinetic energy is same. What about number of molecules? Okay, so वो भी same रहने चाहिए ना? हाँ। वो भी same रहने A चाहिए. remains the Remember, the number of molecules भी तो same रहने चाहिए. Moles है तो molecules भी same है. और kinetic energy decrease तो हो नहीं सकती. और pressure of a gas increases. Expand कर रही है वो तो expand कर रही है इसका मतलब pressure तो कम है. ठीक है. decrease. ठीक है. All right. Next question. The energy absorbed by each molecule, A2 of a substance, is 4.4 into 10 to the power minus 19 joule, and bond energy per molecule is 4 into 10 to the power minus 19 joule. Kinetic energy of the molecule per atom is 2.2 into 10 to the power minus 19. B 2 into 10 to the power minus 19. 4 into 10 to the power minus 20. 2 into 10 to the power minus 20. Chalo. Sir, what is A2 here? A2 is a molecule. A2 molecule, any molecule. Sir, option D. So D. D. Okay. So D option. देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी एनर्जी एब्जॉर्ब Minus bond energy upon number of atoms in the molecules. हाँ तो वो तो पर एटम में अभी निकालूंगा अभी मैं ऑफ अ मॉलिक्यूल में जा रहा हूँ दैट इज 4.4 into 10 to the power minus 19 minus 4 into 10 to the power minus 19 joule. 0.4 into 10 to the power minus 19. और अगर मुझे पर एटम निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 0.2 into 10 to the power minus 19 joules और 2 into 10 to the power minus 20. इसमें बहुत क्लोज था थोड़ा ध्यान से डी और डी में बहुत क्लोज है ना काफी गलती हो सकती है ना इज इट क्लियर कोई पर एटम का नाम हो जाए तो सी ऑप्शन में डायरेक्ट Yes, sir. पर एटम नेक्स्ट by what factor does the average velocity of a gaseous molecule
gases molecule increases when the temperature in Kelvin is double. Okay. Root 2 times. Yes, root 2 times. 2.8. तो अभी आंसर तो सीख लो. 4, 1.4. 1.4. 1.4. देखो, average kinetic energy is a function of temperature. How? See? Now this is kinetic energy 1. Kinetic energy 2 will be, it is double. So that means 2t. Yes or no? That is root 2t. मतलब वो वाला t. Root इसको ऐसे लिखूंगा ना, root 2 into kinetic energy 1. Yes or no? And root 2 is 1.414 times the kinetic energy 1. वैसे रूट एक पेपर में रूट 2 लिखा है, पर इसमें आपको रूट 2 की वैल्यू दे दी 1.4. Next question. A bubble of air is underwater at temperature 15 degrees Celsius, and the pressure is 1.5 bar. If the bubble rises to the surface when temperature is 25 degrees Celsius and the pressure is 1 bar, what will happen to the volume of bubble? A. Become greater by factor of 1.6, becomes greater by factor of 1.1, becomes smaller by a factor of 0.70, becomes smaller by a factor of 1.6. Sir. The first option. Yes, sir. Sir, A option. A option. What about others? देखो, हमने पढ़ा था वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ में बोला था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो कैन आई से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर? सो कैन आई राइट V2 upon V1 is equal to T2 into C1 upon C1 into T2? क्या है? बस अब क्या है? ये फैक्टर निकालना है, तो सॉल्व कर दो. सारे वैल्यूज गिवन है. T2 गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड
E1 is 1.5, E2 is 1 and T1 is 15, so उसका ऐड किया गया। तो बताओ कितना है? इंक्रीज होगा, अगर तो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना है, वैल्यू सॉल्व करके। 25 degree Celsius simple 298 Kelvin into 1.5 divided by 2 हाँ ये 15 है, 28 into 1 बस। तो देखो प्लस में आ रहा है तो ग्रेटर तो पक्का है, तो स्मॉलर वाले तो वैसे ही मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, बस अब फैक्टर बच गया है 1.1 और 1.6 तो 1.6 क्लियर? Yes, sir. क्लियर? चलो नेक्स्ट अच्छा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बॉइल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर चार्ज तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T upon P तो V2 upon V1 is equal to T2 into T1 upon T1 into P ये देखो ना इसको V1 क्या होगा E1 upon P और V2 upon P2 क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ कितने फैक्टर के साथ तो फिर हमने मतलब ये कैसे बताया कि ग्रेटर देन 1.6 ग्रेटर क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव में वैल्यू नहीं आ रही है हां ठीक है बड़ा नेगेटिव बढ़ जाना इसका मतलब तो नेगेटिव आती तो फिर वो स्मॉलर में होता आगे चलिए next question the pressure exerted by 6 gram of methane 6 gram of methane in 0.03 meter cube vessel at 129 degrees Celsius is A. 215,216 Pascal, B. 13409 Pascal, C. 41648 Pascal, D. 31684 Pascal. C option. C option. Okay, what about others? Where's C option? C option. Sir, C option. सबका आएगा C option. All right. So next, two gases A and B. Two gases A and B having the same volume.
diffuse through a porous partition in 20 and 10 seconds respectively. The molecular mass of A is 49 units. Molecular mass of B 50 units. 12.25, 6.50, 25.00. सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सी आंसर आया था कैसे? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो PV is equal to NR भी लगाना है बस। प्रेशर भी आई थिंक गिवन है, तो प्रेशर तो निकालनी है। वॉल्यूम गिवन है 0.03 और N आपका आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो कि 16 है मीथेन है इनटू R की वैल्यू क्या लोगे? R की वैल्यू लोगे आप 8.314 और क्योंकि मीटर क्यूब में है ना तो 8.314 और टेम्परेचर 129 है, इसको आप 129 + 273 याद रखना। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, हाँ वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ तो सीधा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। सी आ रहा है इसका आंसर सी। सर मैं क्वेश्चन का Just 12.25. 12.25 not 25. 12.25. Yes, sir. So VA upon VB into PB upon CA 6.5 चलो करके देख लेते हैं। It is MB upon MK. So ये तो दोनों सेम है, having the same volumes. TB is given to be 10 and this is 20. T, this is MB is what we are supposed to find out. MA is 49. So squaring कर दे, मत करो squaring. So 10 by 20 is equal to root MB. और ये root 7 होगा तो इधर जाके 7 हो जाएगा 70 upon 20. कितना आ रहा है आपका? सर मेरा गलत आ रहा है। ये 7/2 आया ना, बट ये अंडर रूट में है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2 ही आ रहा है, मतलब 6.5 49 by देखो ना 7/2 आ रहा है ना, मेरा भी ऑप्शन और फिर इसका स्क्वायर भी करोगे आप तो 49/4 49 क्योंकि अरे ये रूट है ना तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स भी तो करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स तो 49/4 तो 6 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए। नहीं और वही ये आएगा क्योंकि 1 तो आएगा 1 2 4 हाँ ठीक है 12.25 12.2 not 6.5 yes Gayatri Bhavika Agni Anjana I hope you are getting the answer. Same as the question, right? Asked differently a little bit. 50 ml of
each gas, 50 ml of each gas A and of gas B takes 150 and 200 seconds respectively for effusing out through a pinhole under similar conditions if molecular mass, if Mv is 36 and A बताना है आपको A 96 B 25.2 C 20.25 D 19.85 sorry और ये वाला भी गलत कर दिया मैंने this is 19.65 19.6 actually ये question आपका है but C. C is the answer. Done. So 20.25, sir. 20.25. Okay. 30 seconds. C option. C option. Yes sir, C और C आ रहा है सबका? सबका C आ गया? C option. Should we do it? Same. Next question. Root over 36 by m is equal to 200 by 150 is 20.25. 20.25, right? C is the answer, right? Yes, sir. Okay. Next. The volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 degrees centigrade and 1 bar pressure will be 96.66 liter, 55.87 liter, 5.37 liter. Sir, 5.37. Sir, 5.37 liter. 5.37, okay. That gas B Z of gas K is thrice the that of B. At same temperature.
pressures of the gases, for equal number of moles, are PA is equal to 2PB, 2PA is equal to 3PB, C PA is equal to 3PB, and D 3PA is equal to 2. What about this? The previous question? So C as the answer, PB is equal to an answer. Simple. और R की इसमें R की वैल्यू क्योंकि बार में गिवन है तो ये बोलते हैं 0.083 बार लीटर बार per Kelvin. So this is about this. The second option. Second Sir, option. 2PA is equals to 3PB. 2PA is equal to 3PB. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about others? So D option. D or B? D or B में slightly difference है. इधर उधर का. B. D as the answer. Okay. B. देखो सिंपल है z of a is PA VA upon RT क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है सो RT कैपिटल जाएगा ठीक है और टेंपरेचर भी सेम है अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर सो इसको लिख लो और ZB EB VB upon RT right now VA is volume of A is twice, so that means it is twice of VB, and Z of A is thrice of Z of B. ठीक है? तो ये वाला लेके चलो ये देखो, इसमें Z A है, आपको निकालना है pressures, ठीक है? तो आप क्या करो Z A upon Z B निकालो, which is या फिर इक्वल काम करो ना इस पैसे से ना ZA is equal to price of ZB ठीक है तो ZA है PA और BA की जगह I'm writing 2VB 2VB upon TA is equal to 3 into PB into VB upon TB ये भी same similar conditions of temperature है और BB से GB cancel तो 2PA is equal to 3PB B option 2PA is equal to 3P. थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पे कंफ्यूजन है 3P. ठीक है? So it is 2PA is equal to 3P. Is it clear? अभी तक हमने एक टेम्परेचर देखा क्या देखा critical temperature which is 8 upon 27 the temperature above which a gas cannot be liquid. एक होता है हमारा Boyle's temperature TB which is Boyle's temperature. ये क्या है? The temperature at which a real gas behaves like an ideal gas. Under all conditions of pressure.
conditions of friction. TB is equal to A upon R. बस एक टेम्परेचर ऑफ करना है हमने दिया, which is although इसका मैं इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा केमिकल थर्मोडायनामिक्स में इन्वर्जन टेम्परेचर, बट क्योंकि मुझे अभी रिलेशन निकालना है इन्वर्जन टेम्परेचर, इसमें क्या है, एक गैस, when a gas is passed, देखो क्या होता है, इस तरीके का सेटअप है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, ये आपकी एडियाबैटिक वॉल्स होती है, एडियाबैटिक मतलब ना हीट बाहर जा सकती है ना हीट अंदर आ सकती है, एडियाबैटिक वॉल है, पीछे आपने पोरस प्लग लगाया हुआ है इसमें, ठीक है, दिस इज योर पोरस प्लग, और यहाँ पे आपके दो चैम्बर्स इस तरीके से बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपकी कोई गैस फिल है जो आप उसको इधर से पिस्टन से, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको फोर्स कराते हो तो ये गैस चैम्बर ए से चैम्बर बी में जाती है, ठीक है, ओके, और जब भी ऐसा होता है तो a gas shows cooling effect, a gas shows cooling effect, तो वो क्या है, वही वहां से इन्वर्जन टेम्परेचर का कांसेप्ट आया, मैं बताता हूं, पहले वैल्यूज लिखो, बाकी मैं जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा वहां से, तो TI जो होता है वो दैट 2TB, that is 2A by R, 2A by R। अब मैं अगर तीनों के बीच में रिलेशन पूछूं TC TB, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा, बताओ, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा कौन सा होगा, किसमें, TC TB TI, TB is there, TI उसके बाद TB, उसके बाद TC, बस ये याद रखना, TI is greater than TB is greater than TC, ठीक है, इसको ध्यान रखना इस रिलेशन, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछ सकते, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, एक चीज और, बस एक चीज और है, एक सेकंड, गैसेस स्टेट पे खत्म बाद में रैप कर दो, मतलब लिक्विड स्टेट बचेगा, TC TB TI just a second, there was one question. So ये क्वेश्चन यही था कि the temperature at which a real gas obeys the ideal gas laws over a wide range of pressures is critical temperature, boil temperature, inversion temperature, reduced temperature. The temperature at which a real gas obeys the ideal gas laws over a wide range of pressures is called boil temperature. Under all conditions, Boil temperature. pressures, ठीक है, boil temperature. बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, इसमें बस आप कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैं बताता हूं। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, सर ये बुक कौन सी है, ये आपके नहीं है, जो आपके मतलब का इसमें से मैं कह रहा हूं, takes place, ये expected questions हैं, because of, क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेंड क्या रहा पहले, अगर एक टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछ लिया तो these expected questions are on the go, आ सकते हैं। Molecular interaction between atom and PV upon nRT is greater than, बस Z तो ना लिखिए, बस PV upon nRT लिखिए, कंफ्यूज करने के लिए। Second, molecular interaction between atom and PV and RT is less than 1. C, finite size of atoms and PV upon nRT is less than 1,
and the finite size of atoms, and this is given. Yes. इसीलिए कंफ्यूज हो गए, मुझे पता Z की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगी, पॉजिटिव डेविएशन ये तो पक्का है, तो C, B और C तो एलिमिनेट हो गया। अब बच्चे फाइनाइट साइज या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस? मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस फाइनाइट साइज में जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें, याद करो मैंने इतना अच्छा तरीके से लिखवाया था, Z greater than 1 है अगर, तो इसका मतलब repulsions are greater than attractions, repulsive forces are dominant over attractive forces, and a gas will be difficult to liquefy and difficult to compress. तो मैं कहीं यहाँ पे फाइनाइट, मैं साइज की बात नहीं करता हूँ, अभी मैं इंटरैक्शंस की बात करता हूँ। अट्रैक्शंस डोमिनेटिंग है, रिपल्शन से या फिर रिपल्शंस डोमिनेटिंग अट्रैक्शन से। इतना तो पक्का है कि पॉजिटिव डेविएशन ग्रेटर देन 1 होगा, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब कि मॉलिक्यूलर, हाँ, और फैक्टर क्या है जिसके बेसिस पे मैंने ये बताया, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ठीक है, इसलिए मैंने ये दिया था क्योंकि Z दोनों में ग्रेटर देन 1, तो लेकिन फाइनाइट साइज की बात इंटरैक्शंस के बेसिस। ठीक है, और लेस देन 1 होता अगर तो फिर अट्रैक्शंस डोमिनेट कर जाती है, गैस इज इजी टू लिक्विफाई, इजी टू कम, और आइडियल गैस तो वो लिक्विफाई होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेंपरेचर 0। आई होप दिस इज क्लियर। यस Yes, sir.